In June 2022, Pakistan faced its worst humanitarian crisis in a decade due to heavy rainfall and flash floods. These floods, the most extensive in Pakistan's history, submerged a significant portion of the country. The transgender community in Pakistan, already marginalized, suffered further from this catastrophe, with over 33 million people displaced and millions struggling to meet basic needs. Providing shelter, food, and healthcare to this community became a significant challenge. To address this crisis, the Peace and Justice Network, with support from Concern Worldwide and USAID's Bureau for Humanitarian Assistance, BHA, initiated the Bridging the Barriers, Inclusion of Transgender Community in Flood Relief and Response program in December 2022. This program aimed to bridge policy gaps, capacity limitations, and access issues for the transgender community during flood relief efforts. Overall, 9,455 transgender persons directly benefited by the project. Through project advocacy activities, 2,468 received relief assistance from other actors in 34 project districts. PJN organized district dialogues that brought together the transgender community, government agencies, relief organizations, and local leaders in 34 flood-affected districts. These sessions involved over 1,200 officials, creating an environment conducive to addressing the community's specific needs. PJN launched a 3-month fellowship program in which 34 transgender persons from targeted districts were empowered and capacitated in leadership role in disaster response. They received stipends and played a crucial role in facilitating aid distribution and ensuring the community's safety. मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना ट्रैवल करके आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। जितनी लर्निंग उन्होंने ली है इन 3 डेज़ के अंदर, इस लर्निंग का एक्चुअली अब वो जाके यूटिलाइज जो इफेक्टिवली कर सकेंगे। और इट्स नॉट जस्ट 3 मंथ की ट्रेनिंग, ये 3 मंथ का पूरा फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसमें अब ये वापस जाके भी हमारे साथ 2 मंथ ऑन फील्ड इंगेज रहेंगे और जिसमें मैंने फर्दर एम्पावर करेंगे। और अब इन्होंने जाके अपनी कम्युनिटीज़ के लिए करना है। और इस वक्त हमारा है कि ओवर 4,000 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर्स जो 34 डिस्ट्रिक्ट्स में अफेक्ट हुए हैं, इनके लिए अब ये जाके काम करेंगे। और ये 34 लोग थे जो बहुत एक लेंथी प्रोसेस के बाद सिलेक्ट हुए। अब उनकी एक इफेक्टिव ट्रेनिंग हुई है जो पहली है मेरे ख्याल में इस पूरी दुनिया में, जो स्पेसिफिकली ट्रांस कम्युनिटी को टारगेट करते हुए। जो PJN ने जो ये ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया है, इससे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इंशाल्लाह ताला PJN से उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा भी ऐसे डिज़ास्टर्स पे या ऐसी ट्रेनिंग्स रखेंगे ताकि हम लोग जो है ना अपनी कम्युनिटी भी जाके आगाही दे सकें। अगर हम एक तहसील के अंदर एक फोकल पर्सन बना लेते हैं और UC लेवल के ऊपर एक अपना नुमाइंदा खड़ा कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी जीत की बात होगी। और PJN जिस तरह कर रही है बहुत अच्छी है, एक लीडरशिप के हवाले से, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस सेशन, इस तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी किया है कि सब ट्रांसजेंडर जितना डिस्ट्रिक्ट लेवल है, नेशनल लेवल है, इकट्ठे करके इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत बेनिफिट मिल रही है। With the help of these fellows and district partners, PJN conducted sensitization sessions, reaching over 3,000 transgender individuals in affected areas. They also developed a district referral directory for essential services. Additionally, PJN conducted dozens of awareness sessions with the transgender community in already established drop-in centers in Sindh and Punjab, aiding 4,600 community members and promoting disaster resilience. A national digital advocacy campaign engaged over 1 million citizens and 250,000 supporters to promote safeguarding, protection, and inclusion of the transgender communities during floods and disasters. For ensuring transgender safeguarding, inclusion, and protection,
PJN organized sensitization trainings in 34 districts for 530 humanitarian organizations and 180 government departments across Pakistan, which resulted in transgender communities' inclusion in the flood relief and response activities. To address the policy gaps, PJN developed a sensitization booklet for humanitarian organizations for transgender community inclusion in flood and disaster response, and distributed it to over 700 stakeholders. तो कि इनको हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनकी जो वेलफेयर के काम है वो फ्लड आने पे हों या दीगर कोई ऐसे मामला जो पूरे मुल्क में होते हैं और कोई आसमानी आफत आती है, उस वक्त भी इनका ख्याल रखा जाए। डिज़ास्टर में इनके लिए भी वो शेल्टर्स, फूड, हेल्थ, एजुकेशन के राइट, उनके भी हकूक़ों को प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो एक्चुअली हमारा जो मकसद है वो यही है कि पॉलिसीज़ के अंदर हम लोग जो है मोर प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर आए। इट्स अ नीड ऑफ आवर कि ट्रांसजेंडर अफराद को आप मुल्क के अंदर हर जगह इंक्लूड करना शुरू करें, वो डिज़ास्टर हो। पीस एंड जस्टिस सेंटर की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कराया गया, जिसके तवज्जुह से बहुत सारे ख्वाजा सराओं के अंदर जॉब्स की उम्मीद जागी हैं, उनके बिहेवियर, एटीट्यूड्स के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस दिए जा रहे हैं। तो मैं इसको समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये फर्दर आगे इसी तरह कायम और दायम रहेगा। PJN's advocacy efforts resulted in significant policy changes, including inclusion in national and provincial disaster response policies and budgets. NDMA and PDMA included transgender community considerations, and UNHCR updated its assessment template. Which is very commendable considering कि development sector में programs जब होते हैं, the way they did it in 6 months, I was really amazed. 6 महीनों में इन्होंने इतना सारा काम कर लिया है। अब आपकी recommendations चेयरमैन को हम बताएंगे। This program is groundbreaking in Pakistan's history, promoting transgender community inclusion in the disaster response and empowering the community. It has created an environment that ensures their inclusion at all levels and calls for collective efforts to safeguard, protect, and include transgender communities during floods and disasters with dignity.